बजट 2026 के बाद दलाल स्ट्रीट में बड़ी हलचल देखने को मिली। सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया और निफ्टी 24,600 के नीचे फिसल गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर दिया गया बड़ा बयान। बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में एक हैवी हाइक का ऐलान किया। अब समझते हैं ये STT होता क्या है और इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा। STT एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो शेयर मार्केट में हर बाय और सेल ट्रांजैक्शन पर लगता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। STT ट्रेड के टाइम ही कट हो जाता है। बजट 2026 के प्रपोजल के मुताबिक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.02% से बढ़कर 0.05% कर दिया गया, यानी लगभग 150% की जंप। वहीं ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT 0.01% से बढ़कर 0.15% कर दिया गया, जो करीब 50% का हाइक है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि इस बढ़ोतरी का मकसद है F&O सेगमेंट में रीजनेबल करेक्शन लाना और गवर्नमेंट के लिए एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन मार्केट ने इस अनाउंसमेंट को पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया। जैसे ही STT हाइक का ऐलान हुआ, ट्रेडर्स ने हैवी सेलिंग शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज्यादा क्रैश हो गया और निफ्टी फिर से प्रेशर में आ गया। इस फैसले का एक और बड़ा इम्पैक्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI पर भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि STT बढ़ने से F&O ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी, जिससे शॉर्ट टर्म और डेरिवेटिव बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो बजट 2026 का ये मूव गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन दलाल स्ट्रीट के लिए ये एक टफ फेस ला सकता है। Minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain
exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.